defining vendor master. The vendor master also comes into master data. In master data, we have vendor master, we have network master, we have service master. After this class, we can also start service master. Okay, so it will be in sequence. So what is vendor master? It contains all the information regarding various vendor payment terms like just now we are seeing. In vendor master, we have payment terms, right? So here this is payment terms of payment. Nothing but payment terms. So if you open this, equal 01 means payable immediately. Means once you receive the goods from the vendor, you need to pay to vendor immediately. If you select this 0002, so that means within 14 days, 2%, 3% cash discount. Within 30 days, 2%. Within 40 days. This also, as per the business requirement, we need to customize. Okay. How you customize that will done with the commercial. Okay. And input terms, international commercial terms. So we have so many input terms already defined, predefined. So yes, this is input terms. Okay. FOB, free on board, and the CIP, insurance right to CIF, cost to insurance and right to DAF. So every year, input terms, some input terms will be new. Okay. So if that is the case, then we need to configure whatever 2024 input terms are there, that we need to check whether in SAP we have that all 2024 input terms or something is missing. If that is missing, then we need to configure. Okay, that also comes in the master check. And then uh, vendor master is maintained by both purchasing and accounting department. So this means what? So as a MM consultant, MM consultant will create vendor master from purchasing point of view. So what is the default to create vendor master purchasing point of view? MK01. MK01. Okay. And what is the decode to create vendor master from accounting point of view? FK01. So till now we are using SK01. That is centrally means both accounting and purchasing department comes into picture. So whatever till now we created to vendor master, that is centrally XK01. See here, FK01 means purchasing point of view. Okay, purchasing people means a material management. Purchasing department people will create vendor master with MK01, and finance people they extend whatever field missing in accounting. They will edit. Okay, with FK01. FK01 accounting point of view, company code and accounting. Company code accounting and MK01 purchase organization. Purchase organization. Company code is not there. Okay. It centrally means both the company code as well as purchasing organization comes into picture. SK01. So they may ask in interview how you will create vendor master centrally. So tell them SK01. How you will create vendor master purchasing point of view MK01. How you will create vendor master accounting point of view FK01. Okay. Hmm. So here MK01. Let's say I'm creating one vendor with purchasing point of view. Okay. Asha Company Private Limited. Country and year. Region, currency and law. Okay. So only some these fields are there. No accounting data, nothing. Okay. So this is purchasing point of view. You can even take input terms, international commercial terms. Okay. Let's say because of the input terms also I can select free on board FOB. Okay. If you select this FOB, if you just enter, it will the system will throw an error. What? Please enter the second part of input terms. Okay. See here. Enter part 2 of the input terms. So free on board means you are telling Asha company vendor to deliver the goods till Muradnagar Choti Mandi. From there you will pick up the goods. Okay. That is free on board. Free of cost, the vendor will deliver you the goods till Muradnagar Choti Mandi.
like this. Okay. So now I'm saving this. So this I have created vendor master from purchasing content LK01. So we need to give this 10026 vendor number to finance department. So then finance department people what they will do? They will fill the data according to accounting point of view. Okay. So 100236. Now they will enter their data with FK01. They go here. What is that number? 100 to 100236. Like reconciliation account. It is their work ना. पेएबल ये पूरा परचेजिंग वालों को पता नहीं चलता राइट कौन सा जीएल अकाउंट लेना जनरल लेजर अकाउंट A1 okay they will fill this data payment terms also that we can also define that's not an issue so like this or accounting details and this turning procedure is all taken care by accounting yeah. Yeah exactly that's why they will take care actually payment terms not by purchasing people. Okay, so they have extended. Okay, like this. Okay, now create vendor master L01. Just now we have seen. Extend same vendor to accounting department before going to invoice and payment transaction. L01 this also we have just now seen. If you want both purchasing and accounting department, then vendor master centrally that is SK01. Okay. Now coming to account group. Account group, what is account group? Just like in material master, material type is there, right? Material type controls what? Number ranges, field selection, which field to be made as mandatory, display, height, okay, optional, all that. And here also, account group controls number ranges, which field. No, so 2 3 points are same. So in interview, don't get confused. If they ask in vendor master account group controls what, you just tell them, at least 2 3 points you need to tell, right? Number ranges, just like material type controls what, but material master number ranges, one count is there, right? Here also same count is there. Which field, here also in material type, we have seen, okay, which field to be made as mandatory display, okay. Here also in account group, which field to be hide display optional, that is there. But other points are different. Which partner function roles to be allowed or not? Like the vendor may play GS role. What is GS? Good supplier. The vendor can play as GS vendor. The vendor can be as GS, OA vendor, ordering address vendor, IP, invoice presented by vendor, OS, overseas vendor. Okay. So the vendor can play different partner function role. Okay. So these 3 points I have mentioned. Hmm? It classifies all our vendors as vendor, GS vendor, Q supplier vendor, OA, ordering address vendor, US vendor, overseas vendor, IP vendor, invoice presented by vendor. It may be the vendor, may be manufacturer vendor, trader, price service vendor, and one-time vendor. Okay. So all we can see here, like centrally I will show SK01. This is the account group. So if you open this, we have this goods supplier vendor, GS vendor, okay? GS vendor, IP vendor, invoice presented by forwarding FA, forwarding agent, OA, ordering address vendor, okay? One time vendor, one time vendor, okay? Account group controls one number ranges, like just now we got a number, right? 100205. That is controlling the account group, okay? Number range. This will be hide display optional. So let's say, for example, I will try to show you some of the fields I will hide, okay? Account group. So KIDD. Always we use this KIDD create, na? Create means nothing but vendor, right? To open this KIDD, that is nothing but vendor, right? So what I am doing is I will go to OMSGT code, just like in Material Master, OMS kind, right? You can type if you try to hide the fields in Material Master OMS line, right? Here OMSG, OMSG. Go to OMSGT code and account group. This is nothing but account group. So KRED, let's try with the KRED. Okay, this you select this. Okay, select this. Click details button. Hmm? And here see field status. Double click general data, so you will find some of the fields which is there in general data. Double click. Click addresses.
See here, form of address, search term. Okay, if you don't need search term, if you want to make it mandatory, you can make as required. Suppress means this is height. Okay, name too. Some people they say I don't need a name too. Okay, let's say I'm trying to just have taken two. Suppress means height. Okay, display means it will be in gray mode only. You cannot edit, you cannot make any changes. Okay, same. So now I am going to see here this general data I got. If you want to see some other fields, company code data, double click this account management, double click. See here, so many fields are there. Okay, this is based on, see this arrow based on next page. If you click this, it will go down. Release group, gross income tax. Okay, go back. So here again payment transaction. You can double click this, you will find so many fields which is there in terms of payment, right? Optional. You can make it as separate or requirement mandatory. Without filling this, you cannot create the vendor master. Okay. Payment block, payment method. Okay. So this is based on based on you can see many more fields. Okay. Go back and here correspondence. Double click this. You will find this. Okay. Go back. Withholding tax data. Double click this. Okay. You will find this. Go back and purchasing data. Double click this. Purchasing data. Double click this. See here. There's so many fields are there. ABC indicator, right? And this is based on okay. Plan delivery time, pricing, price marking, tracking, see the confirmation control key. So many fields are there here in purchasing data. Go back, okay. And purchasing sub and double click this. You can see purchasing data. See here. So many fields are there. Okay? So each and every group you need to select and double click this partner usage. You will find this. So accordingly, whatever field you need to make it as separate required, you can make it here. Okay. Purchasing plan. Now we have done only for account group TRED, right? So now let's see XK01. Okay. So whatever account group you have selected there, that only you need to select will be affected. If you are doing there and you are trying to search in GS means that is not possible. Okay. So TRAD only I have selected, right? So you need to practice in TRAD only. Click enter. Now see, सर्च टर्म आता था ना यहाँ पे चलेगा इसके नीचे नेम के नीचे नेम गूगल क्या था बताओ सब नेम एक ही यार you understand? So account group that is controlled by account group. Account group controls what is going to be high display optional. What is the key code? OMSG. OMSG is the key code where you can edit. Okay, edit the fields. Okay, so again I am making it to normal position. So we go to OMSG, create a position A on VD. Click details button. So double click general data address. Okay. Now name to the I'll make it as a required optional. And what else? Search term optional. I'm saving this. Yeah, understood. Okay. Okay. So account group controls number ranges, external and internal are both, which will be hide. That's what we have seen. You can see all about three in OMSU, define account group and field selection. Just now I have shown you. Okay. Account group customization. So here in real time you need to customize. The KRD already is there, but you know the client may say, no, I need a different account group. Okay? So how you will customize? This is OMSU is the default. Here already account group exists. If you require new account group, then we can define new account group. Also, that's what we have seen. No? So many account group. Business scenario.
Suppose client need various account group as follows. Okay, the client need manufacturer, vendor, trader vendor, overseas vendor. So manufacturer, let's say Z triple one, trader Z123, overseas Z124. This is G type. I told you, no? G will start with either one or Z. Okay, you can take this. Number range is, let's say manufacturer vendor, it start with one series. Trader start with two series. Overseas vendor start with three series. ये number range is है. Pre-selection partner roles. VN means main vendor, ordering address vendor, GS vendor, IP vendor. Okay. Here also we are maintaining same. Click new this. So here, let's say we are customizing new account group. Okay. So what is the default? OMSG. Go to OMSG and what we'll do is account group. So here I'm going to position. Here already I will select this. View it is or copy as. Okay. I'm doing copy as. I will remove this KRD and I will put the Z triple one. Okay, Z triple one. I will remove this vendor and I will make it manufacturer. Okay, manufacturer vendor. Hmm? All the fields, let it be set. Don't make any changes. Okay, click enter. मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट है भाई वो आपको क्लाइंट देगा ना तो जो भी अपन कस्टमाइज कर रहे हैं वो बीबीपी आपको मिले तो करना बिजनेस उसका एग्रीमेंट रहता क्लाइंट का सिग्नेचर रहता और कंसल्टेंट का भी सिग्नेचर रहता वो आर गोइंग टू कस्टमाइज दिस तो वो पूरा जो क्लाइंट कन्विंस हुए वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ये डेवलपर सर्वर में करते हैं रियल टाइम फिर उसका टीआर मूव करते क्वालिटी सर्वर में मूव करने से पहले टीआर को रिलीज करते हैं C09 रिलीज करके वो पहले चाइल्ड रिक्वेस्ट के बाद में पेरेंट रिक्वेस्ट वो रिलीज करे बाद से उसमें आएगा क्वालिटी सर्वर राइट सो here is Z triple one manufacturer vendor. Okay. After this, what we need to do? Okay. Again, what I'm doing is I'm trying to create another vendor. First, I'll save this. ये कि उसमें आइडेंटिटी सेटर ये है ना उसको चेंज करना रियल टाइम में करो यहाँ तो चलता है ऐसा कुछ भी नहीं तो व्हाट वी हैव डन कस्टमाइज अकाउंट ग्रुप मैन्यू जेड राइट मैन्युफैक्चरिंग so now we'll create another traders and overseas vendors. So here it's OMSG, okay, and go to position KRD, select this KRD folder, copy as. Now trader, okay. So Z123. So traders. Remove this, make it traders. Click enter and save it. And what else? Overseas vendor. Go to position KRD, okay. Copy as. What is that? Z124. That is overseas vendor. enter ऐसे इतना करने से काम नहीं होगा अब इसका इससे चीजें भी हमको करना है राइट ये हो गया पूरा पूरा काम करें हाँ पार्टनर स्कीमा L1 पार्टनर स्कीमा भी लेना था ओके दस नॉट एन इशू लेना तो ले लो पोजीशन में जाकर क्या करें अपन Z ट्रिपल वन था पहले वाला
हाँ इसकी डिटेल्स में जाता हूँ। ये है ना मेरा यहाँ पे एनरोल एनरोल इन मटेरियल वेंडर एनरोल वेंडर सेम थिंग फॉर सेटिंग। उसके बाद में डिफाइन नंबर रेंज फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड ओ एम एस द पी कोड और वहाँ पर क्या था मटेरियल मास्टर का नंबर रेंज का पी कोड क्या है मटेरियल मास्टर मटेरियल मास्टर का नंबर रेंज इसका पी कोड क्या है एनीवेज तो यहाँ पे वेंडर मास्टर का पी कोड नंबर रेंज इसका ओ एम एस जे ओ एम एस जे यहाँ पे ओके ओ एम एस जे में गया उसके बाद में क्लिक इंटरवल्स राइट ओके क्लिक इंटरवल्स इंसर्ट लाइन करना तो ये यहाँ पे रहेगा एडिट में इंसर्ट इंटरवल ओके F6 बटन यहाँ पे जाओ अब ये नंबर हम क्या करेंगे यहाँ पे विल गिव एज Z1 सपोज 1 सीरीज से लाइक मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 सीरीज ना ये ले लेता हूँ ठीक है 1 सीरीज सम ये ऐसा ले रहा हूँ यहाँ पे ऊपर जो दिखा नंबर क्या ये है ना 1 सीरीज से ये 2 सीरीज ये 3 सीरीज तो बहरहाल मैं ये ड्रॉप डाउन से ले लिया ओके एज इट इज ले लो चलो क्लिक एंटर एंड सेव Z1 कराना ठीक है Z1 और एक ट्रेडर है ओवरसीज को भी देना है राइट फिर ये पूरा इसको ये हो गया गो बैक इंटरवल्स राइट ये रिसेट लाइन हाँ यहाँ से भी जा सकते हैं ऊपर से भी जा सकते हैं Z1 दिए Z2 है ना नेक्स्ट ये दे दिए पूरा ग्रुप भी देना है नंबर एंड भी देना है हाँ तो ग्रुप देना नंबर एंड देना ओके यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा था क्लिक नंबर एंड क्लिक पोजीशन पहले अपन क्या करेंगे Z1 या Z2 दे देंगे ये मैन्युफैक्चरर वेंडर है ट्रेडर है ना ये 10 से 4 सीरीज से चलता है ये भी बना दिया सेव करो और एक क्या Z3 राइट ओवरसीज वेंडर इसका मैं फॉर एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ ये सीरीज ले रहा हूँ 7 ये बना दिया उसके बाद में आई नीड टू गो टू ग्रुप गो बैक यूजर अभी ग्रुप में व्हाट वी नीड टू डू इज अपना क्या क्या है बोलो अपन ग्रुप Z111 है राइट Z111 यहाँ पे जो जाकर अपन क्या करें Z1 दिए ना नंबर है Z1 समझे Z123 मैन्युफैक्चरिंग वाले ट्रेडर की क्या करें Z2 दिए और ओवरसीज वेंडर Z3 दिए तो वो नंबर रेंज आएगा 8 ठीक है सेव करो दिस वे ऑफ ओके
क्या नहीं एबीएन वाले के वो एरर आपको करते हैं वाले को हाँ वो दैट इज नॉट वो किसी वाले का एरर है तो रिटर्न करते हैं लेकिन डेमोनेशन अपन करने की दैट इज डिफरेंट ओके सो यहाँ पे डिफाइन परमिशनल पार्टनर रोल्स का काम है तो इसका मेनू पास से जाते हैं क्योंकि इसका पीको भी मेंशन नहीं करा मैं ओके जो भी तो मेनू पास एसपीआरओ चार्ज यहाँ पे परचेजिंग मटेरियल मैनेजमेंट ओके परचेजिंग पार्टनर डिटर्मिनेशन यहाँ पर नीचे रहेगा यहाँ पे पार्टनर डिटर्मिनेशन ओके डिफाइन पार्टनर रोल्स define partner roles. Okay. Here these are important vendor and just observe the various partner functions and don't make any changes. ये अपन देख रहे partner roles ये अलग अलग right. उसके बाद define permissible partner roles और account group अपना तीन बना था right. तो उसके लिए यहाँ पे नीचे define permissible partner roles क्या है यूनिट पार्ट SPR अच्छा यूनिट पार्ट में दे दिया आप लोगों को ओके क्लिक न्यू इंडिस अभी मैं क्या करूँ यहाँ पे न्यू इंडिस में जा ओके न्यू इंडिस में जाकर फंक्शन वीएन माने मेन वेंडर ओके एंड क्या है वो है ऑर्डर एड्रेस वेंडर नेक्स्ट क्या है जीएस वेंडर गुड सप्लायर वेंडर और आईपी वेंडर इनवर्स प्रेजेंटेड बाय वेंडर ओके ग्रुप अपना क्या बना है अपन पहला जेफ ट्रिपल वन है ना मैन्युफैक्चरर राइट ये ऐसा 4 बार मानो दैट इज नॉट एन एरर यहाँ मैं लिखा भी it shows choose the keys from allowed namespace then click and click and click and click and then save it here we are specifying which partner roles functions are permissible for this account group vendor ownership at account group level in partner schema purchase operation will maintain L1 maintain करना then only maintain it is here अगर L1 नहीं करे तो ये जरूरत नहीं है अपन L1 मेंटेन करें दूसरे को अपन नहीं करें ना तो वहाँ जरूरत नहीं होगा ये कर लो ओके now we'll try to create vendor master okay and check whether testing scenario real time में कैसे करते क्वालिटी सर्वर में ये पीआर जो है वो पहले रिलीज करते हैं एससी जीरो नाम से चाइल्ड इक्वल्स पेरेंट इक्वल्स फिर वो पीआर एससी1 की कोड से क्वालिटी सर्वर में जाके एससी1 में जाके ओके उसको मूव करते हैं जब टेस्टिंग करते हैं हाउ विल टेस्ट SK01 में जाओ जाकर क्या करो ये KRAD अब तक लिए अभी KRAD नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में जे ट्रिपल वाला आगे अपना जे ट्रिपल है क्या करो डबल देखेंगे नंबर है 11 क्या होगा क्या 1 सीरीज है ना गुप्ता एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ऐसे ऑप्शनल फील्ड है ये कौन करते हुए रियल टाइम ऐप भी मालूम हो गया आपको क्या HK01 से ही आता है ये तो फाइनेंस पीपल करते हैं ये जीएल अकाउंट हमको पता नहीं चलता परचेजिंग डिपार्टमेंट में कौन सा जीएल अकाउंट वो फाइनेंस वालों को याद रहता है ये पूरा वो लोग रियल टाइम में वो लोग अब अपन डेमो में अपन ले लें ऑर्डर करने से आएगा हाँ हाँ परचेसिंग पीपल MM वाले MK01 वो लोग कोड बना के वो लोग को देते
कोड जनरेट करके वेंडर मास्टर का फिर फाइनेंस वालों को देते, वो लोग अपडेट कर लेते बाकी का जो भी डाटा, ठीक है। अब मैं सेव करे तो मेरे को ये नंबर आ रहा है, देखो 1 सीरीज आया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, Z222 है क्या, नेक्स्ट वाला क्या था, अकाउंट जो मेंटेन करें Z123 ट्रेडर्स। ठीक है, reconciliation account 1,60,000 और ये वन डोमेस्टिक पेमेंट राइट, INR हो गया। 4 सीरीज से लिया था ना 4, ये भी एक्सटेंशन में कामयाब होगा। और क्या था, अकाउंट ग्रुप 1 to 4 ओवरसीज वेंडर ना, ये 7 सीरीज था ना कुछ। हाँ हाँ हाँ, चेकिंग कर लेते हैं, कंसिडरेशन आता है 1,60,000 आ गया 7 सीरीज, ठीक है। So coming to partner function. Partner function determines which partner roles assigned to a particular main vendor. The vendor can play different roles such as main vendor, VN, ordinators vendor, do supplier vendor and IP vendor. Okay, ये चीजें हैं. So we'll to check this. We'll do some scenario. The following example shows you how various vendors play different roles in a business operation. Step 1. Create vendor master for main vendor. SK01 में क्या करेंगे? एक मेन वेंडर बनेंगे. दिस इज SK01. 3000 में बना चाहिए, आप लोग पोटेंशियली प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मेन वेंडर माने ऑलरेडी है, यहाँ पे है देखो 001, ये ले लो, ठीक है, 0001 इंडेक्स स्क्रीन वेंडर नेम टाटा ग्रुप 50,000, हाँ यहाँ पे आप देना है। तो क्या करेंगे, टाटा ग्रुप, एंटर नंबर कितने लग चाहिए, नंबर क्लियर है, नंबर रहेंगे ना, अपन क्या करेंगे 1 2 3 4 यहाँ पे टाटा रिकॉर्ड कंपनी, एंटर एड्रेस डिटेल्स, इसका टाटा ग्रुप के दिल्ली में असल में, तो दिल्ली का एड्रेस देना, दिल्ली, मेन वेंडर कहाँ पे, उनका दिल्ली में, इंडिया, दिल्ली का रीजन है, दिल्ली बोलते राइट, बैंक डिटेल्स ये सब जो बड़ा देना है, तो ये वाला तो स्किप कर सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम, ऑर्डर करने से वाला पूरा मैं दे रहा हूँ, ठीक है।
In the next screen, you will find partner function. You don't enter anything. अब यहाँ है देखिए, ये partner function है. कुछ भी enter नहीं करना. जो भी है, okay? Don't enter anything as of now. Hmm? Click enter and save it. Enter करो, save. ये हो गया 1 2 3 4 5 लिखो आप. ये main vendor है, VN vendor. VN main vendor. Okay, 1 2 3 4 5. Step 2. Create vendor master for goods supplier vendor, GS vendor. Okay. अभी क्या करेंगे, ये अपना GS vendor है. तो मैं क्या करूँ, टाटा GS vendor. ओके. GS vendor को तो अकाउंट ग्रुप चेंज करना. यहाँ है ना, टू सप्लायर 2002 है, वो ले रहा हूँ. अच्छा, अकाउंट नंबर इनको नंबर भरा ना, तो अपन क्या करेंगे, टाटा जीरो कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 5 था. जीरो 1 2 3 4 नहीं यार, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है. इनका पे जीरो नहीं लेता हूँ. 3 4 5 6. इन बिटवीन 7 सीरीज है ना, तो ए एंड अल्फा न्यूमेरिक है. टाटा जीएस टाटा GS1 लिख लो. टाटा गुड सप्लायर वेंडर. ओके. टाटा GS. तो इसका गुड्स में ये मैं सप्लाई करता हूँ, मैं काम करता हूँ बैंगलोर से. बैंगलोर एड्रेस देंगे अपन. ठीक है. दोबारा मसाला कर ली बैंगलोर. मैं काम करा था तो बैंगलोर एड्रेस ऐसे भी सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड में काम करा था. दोबारा मसाला मैंने था एम्बेसी फैक्ट्री. तो बैंगलोर माने कर्नाटका है. तो कर्नाटका का है या अटेंड reconciliation account payment 1,60,000. ये बैंगलोर जैसे ऑर्डर करेंसी आने ना देंगे. ठीक है. यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा. इंडियन स्कीम ये पूरा है. ओके. In the rescue we find partner function. Don't enter anything as of now. Click enter and save. ठीक है. ये partner functions है ना. partner functions कुछ भी नहीं, just enter करो, save. ये हो गया. Account group uses external number is a specific account number. अच्छा, तो सेव ना हो क्या? नो. 2 2 3 4 5 6 7 यार है. ये हम 7 7 शुरू करेंगे. जनरल डाटा ऑर्डर एनर्जी का प्लस होता है. अरे ये बदल गया ना. ये 002 है ना. GS1 है ना. ये 77 ही है. तो क्या लेंगे बोलो. 777. फिर से करना पड़ता है. टाटा GS1. हाँ वो चेंज करो. ये 777 करो. टाटा GS हल्ली 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 ज़्यादा ना होता है.
पेट है ना, पंचलाल पेट वही बोला, शाम एक पेट, वो हल्ली है, हल्ली है। कर्नाटक में क्या है, 10 है, राइट। बैंगलोर कर्नाटक में आता है। सेव करो, ऑर्डर करेंसी आएगा, राइट। या कुछ भी नहीं करना, सेव करो, तो क्या है, हो गया, ठीक है। ये ट्रिपल सेवन, ये कौन सा है, जीएस वेंडर है, गुड्स सप्लाई। स्टेप 3, क्रिएट आईपी वेंडर। तो आईपी वेंडर का अपन क्या करेंगे, डाटा आईपी करेंगे, डाटा आईपी। इनवाइस प्रेजेंटेड बाय, तो अकाउंट ग्रुप में इनवाइस आईपी वेंडर है 0004 है, ठीक है। ले लिया वो, ये डाटा आईपी बोलते हैं, डाटा डाटा इनवाइस वेंडर, डाटा इसका एड्रेस कहाँ है, हैदराबाद। आईपी वेंडर चेन्नई एड्रेस है, ठीक है, चेन्नई में लिया। ये बिलिंग वेंडर जो है चेन्नई में बैठा हुआ, ठीक है। चेन्नई को तो तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु को तो या तो कंसोलिडेशन ऑफ और यूएमएस, राइट, चलो, ठीक है, टाटा एपी को के नेक्स्ट वेंडर, क्रिएट ऑर्डरिंग एड्रेस, वो वेंडर, वो वेंडर, टाटा वो ऑर्डरिंग एड्रेस का अकाउंट ग्रुप देखो क्या है, ये 06 ऑर्डरिंग एड्रेस, मैंने ऑर्डर लिखा, टाटा ऑर्डरिंग वेंडर, ये हैदराबाद है ना, ये हैदराबाद के एड्रेस है, मैंने तो अब यहाँ क्या करना है, अब क्या पार्टनर फंक्शन में सब ले लेना, क्या क्या लेना, वी एन ओ ए जी एस आई पी, तो यहाँ पे वी एन डालो, नंबर क्या आता है आपका, वी एन का बोलो नंबर, तो यहाँ डालो 1234 नेक्स्ट, ओ ए का क्या लिया, ऑर्डरिंग एड्रेस वेंडर का ओ ए, डाटा ओ ए मिला क्या, और नीचे डाटा ओ ए, नेक्स्ट क्या है, जीएस, जीएस का बोलो, टाटा जीएस बोलो, टाटा जीएस वन, नहीं नहीं, जीएस के बाद वन, नेक्स्ट आईपी, टाटा आईपी, ये पूरा लेना, ठीक है, सिंपल। अभी क्या करेंगे, क्रिएट पीओ, तो मेन वेंडर, ओके, पीओ बनेंगे, अभी 21 है, अभी 21 है, पीओ पीओ बनेंगे, कौन सा वेंडर लेंगे, ओ ए वेंडर, ऑर्डरिंग एड्रेस डाटा ओ ए ना, ऑर्डर ले रहा हूँ, परचेज और क्या है 3000, राइट, ये कुछ भी नहीं है, ये भी 3000 है, मेटेरियल कुछ बना हुआ है 2000 में 1479 में कल बनाया था, ये है ना 1479 है, ये क्वांटिटी लेस है, कुछ भी नहीं है, प्राइस
100 मान 3000. Okay. और store location 2001. Okay. Yeah, I saw later. Currency INR. Indian rupees. INR. In partner tab, observe copy partner function from vendor master. In partner tab. Okay. तो पार्टनर टैब कहाँ पर है? ऊपर है. ये पार्टनर है. ठीक. चलो. VNGS आ गया. इन पार्टनर का ऑब्जर्व कॉपी पार्टनर फंक्शन रोल. ओके. इंटर मैन्युअली और आईपी इंटर मैन्युअली है तो अपन अपने को यहाँ नहीं आ रहा. VNA GS है तो अपन आईपी भी आना है. राइट. आईपी आना. डाटा क्या है? आईपी है ना. ये एक लेना और क्या है? और एक मिसिंग है ना. वो है ना. वो है डाटा क्या है? वो है. थैंक यू. पूरा आ जाएगा. ठीक है. सेव इट. ये पीओ बन गया. ठीक है. नाउ कमिंग टू एंटर जीआर. कुछ शिफ्ट करना है. तो एक बात बोलो. ऑर्डरिंग एंटर बोला तो जो पीओ लेके जो ऑर्डर ले रहा. ऑर्डरिंग एंटर बंदर कहाँ बैठा हुआ? चेन्नई है क्या? क्या थी एड्रेस? वहाँ पे वहाँ से मैंने सिर्फ ऑर्डर ले रहा. उसका काम सिर्फ ऑर्डर लेना. जीएस वेंडर का काम है गुड्स रिसिप्ट. जीआर करते ना तो वो जीएस वेंडर को पिक्चर में आता. पता क्यों? ये पीओ नंबर है ना 178. हाँ 198 है ना. तो महीनों में जा रहा हूँ. एंटर. क्या है? 198 है. एंटर. तो यहाँ देखो. तो पार्टनर में देखते ना. पार्टनर. तो टाटा सप्लाई वेंडर कौन है? टाटा जीएस ऑटोमेटिक ऑर्डर. ये ऑर्डर ही है. सप्लाई वेंडर क्या है? जीएस ऑटोमेटिक हो गया. गुड सप्लाई नहीं. गुड सप्लाई का जीएस वेंडर आइटम हो गया. सेकंड सेव. अब मायरो बनाएंगे. मायरो बोले तो कौन सा वेंडर पिक्चर में आता है? बोलो जरा. मायरो करे तो कौन सा वेंडर पिक्चर में आता है? बोलो मायरो. बोलो चार है ना. आप लोगों का दिमाग दे दिया. ये टाइप भी हो सकते हो. हाँ बोलो. 24 0/2024. पीओ नंबर तो बोलो जल्दी. कौन सा वेंडर आता पिक्चर में? क्या है वो पीओ नंबर? बोलो ना. आईपी आता है. इनवॉइस प्रेजेंटेड बाय. देखो टाटा आईटी वेंडर ऑटोमेटिक होगा. थोड़े वेंडर क्या करते हैं मालूम? उनका काम सिर्फ बिलिंग बनाने का रहता. उन्हें ऑर्डर नहीं करता कुछ भी नहीं. तो ये आईपी चेन्नई चेन्नई से बिल बना रहा हूँ. समझिए बात को. जीएस वेंडर को तो उन्हें सिर्फ गुड सप्लाई करता. ऑर्डरिंग है तो उन्हें सिर्फ ऑर्डर लेता अलग अलग कस्टमर से. ये है पार्टनर फंक्शन. The vendor can play different partner function role, just like QA vendor, IP vendor, GS vendor. ये एक्चुअली अपन देखे हैं. अब समझ में आया ना पूरा? हाँ तो ये पूरा तो मेटल डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई. तो अलग अलग हो गया. अब थोड़े क्या करते मालूम वेंडर. उन्हें आईपी का रोल भी लेता. उन्हें रोल उन्हें कर लिया तो पूरा एक ही वेंडर में हो गया. या अलग अलग सीनियर अपन कर अपन करके देखे कौन क्या उठा रहा बोलिए. समझे ना. डॉक्यूमेंट स्किल कंटेंट में वही अपना डैशबोर्ड में रहता है. शुक्रिया डैशबोर्ड. बड़ा करें तो चलेगा. डैशबोर्ड यहाँ लाइन आइटम का ये और वो मैच होना बोला ना. ये देखो और आगे हटाना. आगे हटाना.
तो बहरहाल ये अपने जस्ट आपको ये बताने का था आईपी नंबर्स की सेव नेसेसरी नहीं सेव नहीं होती ठीक है जस्ट ये पूरा तो आप समझ में है ना vendor may play different part of function roles. So according to controls what number is this function this partner function roles to be allowed or not. And interview puts a what is partner function means the vendor can play various partner function roles like CS vendor, IT vendor, OEM, and various vendor, OS, overseas vendor, etc. Yes. Yeah. Okay. तो आज के लिए बस करिए